Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel UF Reaction. This is Usama. This is Maria. This is Umar. तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दो फिर से बांग्लादेश की वीडियो लेके आपके सामने हम लोग हाजिर हो चुके हैं। तो आज उमर भाई हम किस पे वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, आज का जो वीडियो है वो है जी वर्ल्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थिंक अबाउट बांग्लादेश। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश जाके मेडिकल की जो है वो तालीम ले रहे हैं, और इंडिया के बहुत से लोग जो हैं बांग्लादेश में इस वक्त गए हुए हैं, नेपाल से बहुत लोग गए हुए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से कंट्रीज से जो है लोग यार बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ से स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो आज भी कुछ ऐसे वीडियो देखते हैं। वीडियो नहीं अभी तक देखा तो पहले देख लेते हैं वीडियो में क्या दिखाते हैं। तो टाइटल से तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो देखते हैं। वीडियो में जाने से पहले गाइस प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको मजीद वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। Stay with us. हेवी गो। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি যে কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন আমি হাইডেলবার্গ জার্মানি থাকি এবং আমি হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমার মাস্টার্স সম্পন্ন করেছি। তো এখানে আমার অনেক সাউথ এশিয়ান ফ্রেন্ড আছে। তো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কন্টেন্ট যে আমরা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের ব্যাপারে আমাদের কি ভাবনা। তো আমি এটা একটা ধারাবাহিক ব্লগ, তো আমি এটা শুরু করছি আমার পাকিস্তানি ফ্রেন্ডদেরকে দিয়ে যারা তাদের অপিনিয়ন, তাদের পার্সপেক্টিভ আমাদের বাংলাদেশের বিষয়ে। তো আজকে আমার দুই ফ্রেন্ড দিয়ে শুরু করেছি। তো স্টে উইথ মি, স্টে টিউন, थैंक यू। ब्लॉग में हूँ आजकल। फरहान मेरा नाम है और मैं कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हासन ने मुझसे पूछा कि मेरे यहाँ पे जो बंगाली दोस्त आज तक बने, मैं यहाँ तकरीबन 3 साल से हूँ, 2018 से। तो उनसे आप मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने सोचा कि ठीक है आप थोड़ी बात हो जाए इस हवाले से। मेरे यहाँ काफ़ी बांग्लादेश से दोस्त बने एंड आई थिंक 3 or 4 of them are very close to my heart. Mr. Hassan is one of them. So we had very good time here in Heidelberg. Bangladesh, what comes to my mind when I hear about Bangladesh, I think it's all about greenery, fish, land of rivers, land of emerging economy, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं बांग्लादेश के हवाले से जब नाम जहन में आता है तो। Another thing that comes to my mind, because I've been following the Bangladeshi economy for the last 5 years or so, the economic growth in Bangladesh is quite promising. And I just few days ago I was checking the GDP growth rate of Bangladesh. It's like happening economy, because we have recently seen that the GDP growth of Bangladesh has been quite well. The per capita income of Bangladesh has also crossed Indian per capita income, or is going to cross maybe next year, because according to the World Bank numbers. So these things are quite positive for Bangladesh. So we wish well for Bangladesh. And regarding the bilateral relations between India and Pakistan, I would say that there is a huge potential, because Bangladesh exports to Pakistan are not as good or as much as Pakistan is now exporting to Bangladesh. So I would like to see more exports from Bangladesh to Pakistan. I also see that both countries also want to have FTA with each other, free trade agreement. So I think it is in Bangladesh interest to have FTA with Pakistan, because by doing that Bangladesh would be able to increase its exports to Pakistan. Right now Pakistan's exports to Bangladesh are over 750 million, and Pakistan's exports to Bangladesh and Bangladesh exports to Pakistan are just 44 million, like 16 times difference. So Pakistan is quite ahead in that category. So Pakistan exports cotton and machinery to Bangladesh, and Bangladesh also exports leather products and other fresh foods to Pakistan. So I would like to see more Bangladesh exports to Pakistan. Yeah. Hey everyone, my name is Myra and I'm from Islamabad, Pakistan.
and I live in Heidelberg. I studied anthropology and now I work as a public health researcher. Today I have to talk about what comes to my mind when we say Bangladesh or Bangladeshis. So, first things, a lot of what comes to my mind has been developed in the last few years as I got to know डेवलपमेंट वाकई बांग्लादेश को Bangladeshis सुन and के ना got सबसे पहले यही connected to चीज़ें them आती हैं and, सही बिल्कुल ऐसी है। really just was on basically everyday terms with so many different people from so many different parts of Bangladesh, and I traveled with them. We hung out and we ate, and I realized that we have so many similarities, and I also acknowledge that there are a lot of things that we need to communicate about as Pakistanis and as Bangladeshis collectively. I recognize that there have been a lot of issues, and I understand now. When I was growing up in Pakistan, Bangladesh was a country on the other side. It was once a part of Pakistan, but that was before my generation. And there wasn't much conversation about it, and even conversation about what happened in 1971, because when I was growing up, it was more of a Pakistan and India conflict, and we never really thought about Bangladesh as a country and all the small dynamics. You go over that in your social studies class, but we never really thought about it. And one of the important things that I learned here in Heidelberg when I met Bangladeshis is that we have to understand, like Pakistanis have to understand the complicated issue of language. And initially I would talk to my Bangladeshi friends in whatever is Urdu and Hindi, and after a while I felt that I didn't understand how heavy that issue is for the Bangladeshis. As a Pakistani, I don't understand that, and I think it's respectful to speak in another neutral language, and I wish that people in Pakistan understood more about how important some of the things are, and I would like that in the future we can talk about our similarities and not about our differences, but I definitely acknowledge that we first have to settle our opinions and scores about our differences, and acknowledge as Pakistanis what Bangladeshis went through in the 60s and the 70s. We need to see history and then move on as well, and then see what opportunities we have in the future, and the little things. We need to exchange our spices and try to make that perfect fish curry that we can never have in Pakistan. देखें, जब बांग्लादेश पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एक चीज़ जहन में आती है कि देखें जो 1971 में हो चुका उसका ट्रॉमा पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, और वो हम समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश के लोगों के जहन में है 1971 की यादें आज भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर माजी को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम शायद 21वीं सदी को आगे ना देख सकें। अब आपने जैसे देखा कि बांग्लादेश की इकॉनमी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बेहतर हो, और बांग्लादेश भी चाहता है कि पाकिस्तान से रिलेशंस बेहतर हो। आप ये देखें कि हमारे पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स थी दोनों मुल्कों में, अब आज नहीं है। विमान एयरवेज या PIA पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम पहले एक दूसरे के पास एयरलाइंस आया जाया करती थी, लेकिन इस वक्त कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको या तो दुबई से कनेक्ट करना होगा या आपको अबू धाबी से कनेक्ट करना होगा। सो गल्फ एयर्स के थ्रू दोनों कंट्रीज कनेक्ट हुए हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि दोनों कंट्रीज अपनी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करें और 71 के ट्रॉमा से बाहर आएँ,
क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो आप बायलैटरल रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं वो माजी की यादें हमारे साथ जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल यकीनन बहुत बुरा हुआ बांग्लादेश के अंदर, लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो हो सकता है कि अभी भी बहुत से लोगों में वो होना भी चाहिए, लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं हमें ये सोचना है, क्योंकि हो तो बहुत कुछ सकता है। जैसे हमने बात की, इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ट्रेड बेहतर हो सकती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। अगर ये काम किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बेहतर चल सकते हैं, और लोगों में एक दूसरे में काफ़ी प्यार मोहब्बत है। आपने शायद यूट्यूब वीडियोज़ पे देखा हो जो बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तानियों की राय है, वो आप काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ पे देख सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव है, जो इस बात का सबूत है कि जो यंग पाकिस्तानीज हैं वो बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस चाहते दोस्ती का हैं। रिश्ता चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का रिश्ता देख के आगे चलना चाहते हैं और 21वीं सदी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक दिस विल बी like the best era of our relationship in the future. I hope so, and I am sure that this is gonna happen. সুতরাং আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আমার দুই পাকিস্তানি ফ্রেন্ড তাদের বাংলাদেশের বিষয়ে মূল্যায়ন। তো আপনাদের যদি এই কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকে এবং আপনাদের जी तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो देखी और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और आपने लोगों के जो पाकिस्तानीज थे उनके कमेंट्स देखे कि बांग्लादेश के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। स्टडी के लिए आए हैं, वो कहते हैं हमने इतनी अच्छी स्टडी की है यहाँ वहाँ से बांग्लादेश और से। उसके लोग उम्र भी पढ़ना भी चाहते हैं, जाना चाहते हैं, रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, खासतौर पे जो यंग जनरेशन है। जैसे कि लास्ट पे वो एक भाई ने बात की कि यूट्यूब पे आप देख लें कि बहुत से लोग जो हैं बांग्लादेश के बारे में, जो आज की जनरेशन है बहुत पॉजिटिव सोचती है और रिलेशंस को लेके वो मतलब इतने सीरियस हैं कि वो रिलेशंस को आगे साथ लेके चलना चाहते हैं। तो ये, और फ्लाइट्स की बात की, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं बांग्लादेश जाती है और वो गल्फ कंट्री से होके जाती है, तो ये एक इस तरह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए। और रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे ना तो सारी चीजें ही बिल्कुल। और जैसा कि वीडियो में बता रहे थे कि अगर 1971 पे अगर उसके पास्ट में हम पास्ट को सोचते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो यकीनन जैसे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी जितने हैं उनके जहन में अभी भी जो है वो यादें हैं और वो वाली मेमोरीज हैं, और शायद गुस्सा भी हैं बहुत से लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें सब कुछ भूल के जो है, और उनको गुस्सा होना भी चाहिए और हमें एक लेकिन हो जाना चाहिए अब। और अब जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, और दोनों कंट्रीज़ में जो है वो ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ में जो है फ़्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट होनी चाहिए, और लोग आ जा सकें, और रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पहले से। वगैरह एक दूसरे की तरफ लगनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे काम होने चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। दूसरी चीज ये लोगों कि हम लोग भी यही चाहते होते हैं कि आपस में हम सब एक हो जाए, हम सब एक प्यार होके मोहब्बत से रहें। हम क्यों बैठे। बांग्लादेश की इतनी वीडियोस देखते हैं क्योंकि हम बांग्लादेशियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमें अच्छा लगता है देखना, अच्छा लगता है हमें देखना। और बल्कि पर्सनली हमारी पूरी फैमिली का दिल करता है कि हम सब बांग्लादेश जाएं, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे हर सिटीज को देखें, उनके फूड को पसंद करके खाएं, हर चीज को मतलब एंजॉय करें वहाँ पे जाके। तो हमारी दुआ तो यही है कि जल्द से जल्द रिलेशंस अच्छे हों, एक हो जाए। बिल्कुल। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, और आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।